Hello and welcome back to my YouTube channel. Today we have an exciting tutorial for you. I'm going to show you how to achieve a beautiful clean makeup look. This is a perfect look for offices, for universities, and also if you want to look fresh and radiant, this tutorial is for you. So let's get started. I'm going to start off with my brows. It's very important for this look to have clean brows. You can either just use soap brows kit to give your brow a very natural finish, but I'm going to also fill in the gaps and spaces that I have in my brows to give it a more clean and fresh look. You can use any kind of eyebrow kit, and here is the main trick that I use to achieve a very clean look, that is to use a color corrector. मेरी स्किन के मुताबिक आई यूज़ एन ऑरेंज कलर करेक्टर. अगर आप थोड़े फेयर हैं तो you'll go with a green or a pistachio color corrector. And I'm going to fill in all the spaces that I have a little bit pigmentation on, थोड़ी सी darkness है, कहीं पे कोई breakout है, इन सब जगहों पे I'm going to use a very little amount, and then I'm going to press all the product in using my ring finger, because apparently इस finger पे सबसे ज़्यादा आप pressure apply कर सकते हैं. And using finger is also helpful because जो body का heat होता है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका product melt होता है sponges की जगह. And next step is using a concealer that is exactly your skin tone, not lighter, not darker, but exactly your own skin tone. You can use any concealer that you like, or any concealer that is available around you, and this is how we're going to just layer it up. ऑरेंज कलर करेक्टर के ऊपर आपने ये वाला कंसीलर लगाना है जो कि बिल्कुल आपकी स्किन टोन के जैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी स्किन टोन का होना चाहिए. एंड दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू कैंसल ऑल द डार्कनेस, ऑल द पिगमेंटेशन. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज़ अ लाइटर कंसीलर जो कि आपकी स्किन टोन से एटलीस्ट 2 टोन लाइटर होना चाहिए. फॉर फाउंडेशन यू कैन यूज़ एनी फाउंडेशन. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फाउंडेशन दैट गिव्स अ वेरी लाइट वेट finish, but also is very glowy and gives a very dewy finish. It's important that you use a very buildable foundation that matches your skin tone, and just apply it evenly, and just use a makeup sponge or a brush. Just remember that less is more for a clean makeup look. जितना कम product लगाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी finish आएगी. For blush on, I am going to use a creamy blush on. This is a stick from Revolution. इसको आप जितना चाहें build कर सकते हैं, जितने ज़्यादा layers चाहें apply कर सकते हैं. This is not going to mess up the look, and also give a very natural finish to your skin. And इसके बाद आपको highlighter की भी ज़रूरत नहीं है. As you can see, it is giving a very clean and dewy and थोड़ा सा glowy भी आपके face को ही कर देगा. लगाने के साथ ही आपकी जो है skin बहुत ज़्यादा ग्लो करनी शुरू हो जाएगी. जल्दी से अपनी आँखों को करते हैं fill in. For your eyeshadows, we are going to use the eyeshadows जो exactly आपकी eye की pigmentation के जैसे है. We have to use very light shades on your lids and slightly darker shade in the crease line, but you can also use whatever you like. इनर कॉर्नर के लिए वाइट आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, पाउडर नहीं यूज़ कर रही. जितना क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा ग्लोई लुक और ज़्यादा क्लीन लुक आएगी. उसी पेंसिल के साथ इनर वाटर लाइन फिल इन करेंगे हम अपनी. एंड वाइट आई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं आप, न्यूड पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं. दिस विल जस्ट ओपन अप योर आइज एंड मेक यू लुक मोर फ्रेश एंड रेडिएंट फॉर द डे. इनर वाटर लाइन, आप अपर वाटर लाइन को काजल पेंसिल के साथ, कोई भी काजल पेंसिल लेकर उसको फिल इन करेंगे, because we're not going to use any liner or any darker shade for the eyelids. तो ये टाइट लाइन करना बहुत ज़रूरी है. मस्कारे की तरफ चलते हैं, लेकिन मस्कारे की तरफ चलने से पहले do not forget to curl your eyelashes. मस्कारे की अच्छी सी लेयर आपने कोट करनी है, because your eyes are going to stand out. Moving on to your lips, natural lip liner यूज़ करेंगे जो exactly आपके lips के जैसा ही है, because we don't want any pop of color in this look. You can see that I'm using very nude and very subtle colors that are very close to my own skin tone. And also you can finish this look using a lip gloss, and you can leave it matte as you like. And this is going to be my complete look. And
Please do not forget to subscribe to my channel if you're new, and if you have already subscribed to my channel, please drop in comments what more looks would you like to see. And this is the complete look. I hope you guys like it. This is a complete guide to a clean and natural makeup look. This look enhances your beauty without looking overly done. Thanks for watching, and we'll see you in the next tutorial.